Hello, good evening to all of you. Today we are going to discuss a very important topic which is related to your science and technology. But before you are going to proceed, you are very welcome in this platform of Think Beyond Noise. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. तो let's news is about the science and technology, that is the about the space technology, especially about the space technology, that is commercial launch of the Indian heavy rocket. So in this video we are going to discuss first the rocket, then we are going to discuss heavy rocket, and also we are comparing the other country which have the such type of the rocket in this. This is very important, and every year, especially in the UPSC, every year not every year, but in the last 7 years 2 or 3 times they ask questions from the especially of the rocket, because rocket is the very important things to send satellite, any satellite in the orbit, because the orbit is the only vehicle that achieve the orbital speed. Orbital speed means that those speed that minimum speed that required to put in the satellite in the orbit, that orbit around the earth, means the वह अर्थ के चारों तरफ घूमता. तो फर्स्ट लेट अस सी द न्यूज क्या है और क्यों यह वीडियो आज हम बना रहे हैं. लेट अस सी in the 23 October 2020, Indian Space Research Organization, Apex Institution of the Space related, a important milestone. What? Because they launched the one satellite of OneWeb from the rocket LVM, launch vehicle M3 module 3 से उन्होंने एक OneWeb इंडिया 1 मिशन लॉन्च किया है. The first we will see what is the OneWeb in the brief. That is, OneWeb is the private company that is in the Airtel and UK government, and they provide the space internet. Actually there are 3 way right now we are accessing the internet. First is the cell tower, second is the broadband, and third is the space internet. Reach of the space internet compared to the cell tower and broadband is the very high. मीन्स स्पेस से सैटेलाइट होगा जिसमें ट्रांसपॉन्डर होंगे और सबको इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा. तो इसका OneWeb जो इंडिया में एक्सेस करेंगे, इंडिया में बिजनेस चलाई सी, तो पहली बार LVM को पहले GSLV Mark 3 जो मीडिया उसे बाहुबली कहती है, सो अब LVM उसका नाम हो गया, उससे पहली बार भेजा गया है. ठीक. और दिस रॉकेट का स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं. 6 ton payload into the low Earth orbit. There are 3 types of the orbit on the basis of the distance. First is LEO 200 to 20,000, then MEO 5,000 to 20,000, then HEO above the 20,000 की HEO बोलते हैं. Low Earth orbit, medium Earth orbit and high Earth orbit. So generally the height of these satellites, high Earth orbit is लेस देन 400 किलोमीटर, 200 to 400 किलोमीटर तक रहेगा. तो ये पहली बार एक कमर्शियल OneWeb को हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है NSIL के तहत पहली बार हमने GSAT किया, जो टाटा स्काई वाला. अब पहली बार हमने OneWeb को किया और एक नाम चेंज कर दिया LVM. पहले इसका नाम था GSLV Mark 3 को अब हमने बोल दिया लार्ज व्हीकल मॉड्यूल 3. क्लियर. अब हम देख लेते हैं कौन कौन से कंट्री में इस तरह का व्हीकल है. तो पहले हम लोग एरियन 5, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लॉन्च व्हीकल, मोस्टली so many satellites that used this vehicle to put in the orbit. Then the long march चाइना का है. स्पेस लॉन्च व्हीकल अभी हम जो आर्टेमिस का लॉन्च करने वाले थे 2 बार, जो फेल कर गया USA का, वह स्पेस लॉन्च वेरी हैवी लॉन्च व्हीकल. दैट इज द स्पेसिफिकेशन हेयर राइट लिफ्ट ऑफ मास 300 kg and here in the 850 kg and here in the 1420 kg Falcon rocket. Falcon heavy rocket is the owned by the SpaceX Elon Musk. Clear.
सो अब इंडियन के रॉकेट के वी हैव द रॉकेट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द वी हैव रॉकेट इन द ऑपरेशनल इंडिया करंटली 3 ऑपरेशनल ऑर्बिट. इफ यू टॉक अबाउट द ऑर्बिट launch vehicle, sorry, history of the launch vehicle, then the first experimental launch vehicle we had, that is the SLV, then we augmented that ASLV, then we have PSLV, then we have GSLV, and then we have SSLV, and then we have right now we have RLV. ये हमारे रॉकेट का इतिहास है. बट दीज टू आर द रिटायर. ओनली वी हैव राइट नाउ PSLV, GSLV, PSLV, GSLV. क्लियर. SSLV द स्मॉल सब 500 kg क्लास सेटेलाइट के लिए यूज होता है, इसको बाद में कभी चर्चा करें. RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, दिस इज इन द TD टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, अभी प्रोटोटाइप में एक्सपेरिमेंटल फेज में है. सो वी हैव जनरली 3 ऑर्बिट एंड GSLV का 2 है, एक मैक 2 है और एक मैक 3 है. मैक 1 अब रिटायर हो चुका है, यूज नहीं होता है ना. सो तो वी हैव 3 PSLV and then GSLV Mach 2 and GSLV Mach 3, जिसे LVM अब कहा गया है. We have operational 3 orbit and reusable launch vehicle, that is the in the experimental stage. The some of the here achievement of GSLV Mach 2 that used in the only 14 mission, out of which 4 have ended failure, यानी 4 इसमें फेल कर गया, 10 पास हुआ. LVM पहली बार चंद्रयान हमने 2 भेजा था 19 में, जिसमें ऑर्बिटर था, लैंडर था और रोवर था, जिसमें से ऑर्बिटर अभी काम कर रहा है, लैंडर और रोवर फेल्ड बिकॉज ऑफ द हार्ड लैंडिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द मून. क्लियर. So here some of the pictures, see here, PSLV, the most prolific rocket, lift off mass 320, payload LEO 131.35 यानी 1750 kg and 1400 kg GTO. GTO actually GTO geosynchronous transfer orbit. Geosynchronous transfer orbit, this is a not orbit, this is the mechanism to put the satellite in the geosynchronous or geostationary orbit. Clear. As sometime it is called the home and transfer orbit. It is the mechanism to put the satellite LEO from the GSO. Clear. LEO from the GSO. Then here is the LVM3. LVM3 is the nothing, it is the GSLV Mach 3. Here a specification, LEO 8 ton, GTO 4 ton. Here GSLV Mach 2, that is used for the putting in the communication satellite, own communication satellite, that is in the LEO 6 ton and GTO 2.25 ton. So this video, this news is why important, because in the UPSC and other examination also questions may be asked from the specification of the launch vehicle, because right now the age of the space technology, each and everything right now depends upon the space technology. If you go to the ATM, insert the card, so many space technology involved there. Now, number of the economic program, economic scheme, that is the Gati Shakti like a scheme, also the number of the satellite involved, so many economic, so many geographical, as for example forest survey report, the our satellite involved. So the maybe ask questions from this heavy lifter, heavy launch vehicle, that's why I make the video. Clear. So if you have this is the Think Beyond Knowledge. If you like this video, please subscribe and like me. Okay, good night to all of you.